हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड ए इंग्लिश बाल भारती लेसन नंबर 2.1 होकेशन इस लेसन का इंग्लिश वर्कशॉप देखने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स और फ्रेजेस मैच इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वंस। यहाँ पे जो फ्रेजेस और वर्ड्स दिए हैं उनका हमें मीनिंग जहाँ पे मैच होता है वहां पे राइट करना है। तो फर्स्ट वन है, नोबडी टेक्स हिम टू टास्क। तो उसके मैच होने वाला जो फ्रेज है, स्कोल्ड एंड करेक्ट्स। सेकेंड वन है, डैश डैश इफ ही गेट्स बैक इन द सन। यहाँ पे बैक इन द सन से मैच होने वाला जो वर्ड्स है, एक्सपोज टू हीट। थर्ड वन है, डैश डैश चेसिंग द शैडो विथ माई लैंटर्न। मीनिंग वाला फ्रेज है, फॉलोइंग इमेजिनरी गोल्स। फोर्थ वन है, द लेन इज डार्क एंड लोनली। यहाँ पे डार्क एंड लोनली के नीचे अंडरलाइन दी गई है, उससे मैच होने वाली जो फ्रेज है वो है डेजर्टेड। फिफ्थ वन है, ही सॉइल हिज क्लोथ्स विथ डस्ट। तो यहाँ पे सॉइल हिज क्लोथ्स इसको अंडरलाइन की गई है, इससे मैच होने वाला जो फ्रेज है यानी कि उसका आंसर है डायरेक्ट इज द क्लोथिंग्स। सिक्स्थ वन है, डैश डैश देयर इज नो रोड ही मस्ट टेक डैश डैश। तो उसके मैच होने वाला जो फ्रेज है, नो पर्टिकुलर रूट। क्वेश्चन 2 है, रीड द पोयम एंड फिल इन द टेबल। पोयम रीड करके हमें ये टेबल फिल करना है। यहाँ पे मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड नाइट दिया गया था। लोकेशन, मॉर्निंग का लोकेशन क्या है, इन द लेन। पोइट्स एक्टिविटी क्या है मॉर्निंग की, गोइंग टू स्कूल। हॉकर्स एक्टिविटी क्या है मॉर्निंग की, क्राइंग बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स टू सेल देम। गार्डनर्स की एक्टिविटी क्या है, नहीं है। वॉचमैन की भी एक्टिविटी नहीं है मॉर्निंग की। आफ्टर दैट आफ्टरनून की एक्टिविटी क्या है, लोकेशन इन द गार्डन ऑफ द हाउस। पोएट्स एक्टिविटी क्या है आफ्टरनून की, रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। हॉकर्स की एक्टिविटी नहीं है आफ्टरनून की। आफ्टर दैट गार्डन्स एक्टिविटी, डिगिंग द ग्राउंड, सॉइल हिज क्लोथ्स विथ डस्ट। और वॉचमैन की एक्टिविटी नहीं है। आफ्टर दैट नाइट लोकेशन क्या है, इन द डार्क एंड लोनली स्ट्रीट। नाइट की पोएट्स की एक्टिविटी क्या है, गेटिंग रेडी टू गो टू बेड। हॉकर्स की एक्टिविटी नहीं है, गार्डनर की एक्टिविटी भी नहीं दी गई है। वॉचमैन की एक्टिविटी क्या है नाइट की, वॉकिंग अप एंड डाउन द डार्क एंड लोनली स्ट्रीट, स्विंग्स हिज लैंटर्न एंड वॉकिंग। क्वेश्चन नंबर 3 है, थिंक एंड आंसर इन योर ओन वर्ड्स। उसमें ए है, व्हाट कुड बी द एज ग्रुप ऑफ द स्पीकर इन द पोयम। पोयम में जो स्पीकर है उसकी एज ग्रुप क्या है। आंसर, द स्पीकर ऑफ द पोयम इज स्मॉल बॉय ऑफ अबाउट 10 years। बी है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हॉकर्स एंड शॉपकीपर। आंसर, a hawker is one who sells his goods moving around the streets by crying out a load to advance the good. A shopkeeper is one who sells his good in a shop. He does not move around. C1 question है, how does parents react when they see children soil their clothes in dust and heat? Answer है, when parents see their children soil their clothes in dust and heat, they scold them as they feel they have become dirty and germs might make them fall sick. Question D है, why is the street light compared to a one red eye gint? Answer, the child compares the street light to a one red eye gint because the roads are lonely and desolated and it is only his light that stand one on the street. ये क्वेश्चन है, what exactly does the speaker in the poem crave for? इसका आंसर है, the speaker in the poem crave for freedom from authority. The question,
Does the poet really wish to become a hawker, gardener, or watchman? Justify your response. Answer. According to me, the poet is a small boy. He is actually fascinated by work of the hawkers, gardener, and watchman. He feels that all these three enjoy freedom in their works, but on the other side, he is under an authority. Hence, I feel he really does not wish to become any of these three. क्वेश्चन नंबर 4 है से why the shopkeeper of the poem wish to be a hawker, gardener and watchman. Answer. Hawker, so that he can move around freely as per his own wish and will. Gardener, so that he can dig the ground, soil his clothes, get back in the sun and get wet with no one to scold him. Watchman, so that he can walk up and down the street freely with no restrictions. Question number 5 है pick out lines that contain alliteration, smiley, repetition, onomatopoeia. Answer. Alliteration. There is nothing to hurry him. On open window, the watchman walking up. Smile. The street lights stand like a glint with one red eye. Repetition. Bangles, crystal bangles. Onomatopoeia. When the gong sound. Question number 6 है some poets do not use uniformity in rhyming words nor are steady rhymes. Such a poem with no uniformity in rhymes, lengths of lines or stanzas are called free verse. Walt Whitman, Ezra Pound, T.S. Eliot, Rabindranath Tagore are some famous poets who have composed poems in free verse. A quick glance at the poem Vocation reveals that the style used by Tagore is free verse. Now turn the pages of your textbook and see if you can find other poem in the free verse. Answer. A Time to Believe by B.J. Morbidzer, The Plate of Gold by James Harry Lee Hunt. Question number 7 है what vocation or profession or business would you like to take up in future? Prepare a fact file for the same using the following points. अगर आपको फ्यूचर में कुछ बिजनेस करना है, कुछ ओकेशन प्रोफेशन वगैरह है, तो ये फैक्ट फाइल आपको फॉलोइंग पॉइंट की हेल्प से प्रिपेयर करनी है. तो यहाँ पे देखो ये है आंसर. द नेम ऑफ वोकेशन प्रोफेशन और बिजनेस ये इंजीनियरिंग है. ओके. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड BE और BTech हो सकता है. वर्क प्रोफाइल और डिस्क्रिप्शन, सेटिंग अप ऑफ प्रोजेक्ट्स और सेटिंग अप प्लान्स और इन्वेंटिंग न्यू इंस्ट्रूमेंट्स एंड मशीन्स. 4th पॉइंट है अपॉर्चुनिटीज फॉर एडवांसमेंट, excellent in a developing country like India. Your personal skill or talent for the choice. My interest in seeing how various machines work and my talent in repairing simple instruments. Question number 8 है read and understand the following poem, paper boats and write its paragraphs in your own simple language. You may take help of dictionary or internet. The first line is done for you. यहाँ पे ये जो फर्स्ट लाइन दी हुई है ऑलरेडी डन की गई है यहाँ पे. ओके. तो आपको क्या करना है, पेपर बोट्स जो पोएम दी गई है यहाँ पे उसको सिंपल लैंग्वेज में प्रीफेस करना है. ओके. सो ये आपको खुद को करना है. Thanks for watching video. If you like my video, subscribe my channel, press the bell icon, like करो, कमेंट करो, शेयर करो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.